Yeah, good morning everyone. So as of now, chalo, four students, Akashdeep, Negashi, Nikunj and Kanika. As it's an arrangement, I'll not be talking about maths in journal. How many of you have heard about CS first? You can always unmute yourself. Heard about CS first? Anyone heard of this term? No idea. Okay. What could it be? CS first. What is the full form of CS? Yes, it exactly refers to computer science only. Let me just share my screen, entire screen. All right. So check this out. Please confirm is my screen is visible. A new tab is open. Okay. So in the Omni box, I'm just typing CS first Google. So it's about computer science first is a program name offered by Google for free. So Google and let me go to say student as a student because teachers, I mean, they have their curriculum to consider, so they may not taking and talking about this in journal. But as a student, if you are really interested in knowing basics of the coding, so the basic idea, few of you might be doing even advanced, but if someone is a say science student, grade 11, grade 12, or even a grade 7th or 8th, it hardly matter in journal. Just go to type Google CS, yeah, CS first only, and then you have the option for student login. Teacher login is different. So go to the student login directly, and because I have already logged in, you can see on the right hand side as a student. If you enter this website for the first time, so it will ask you for entering your email ID and some conditions whatever they are. You can just check that out. So I've shared the web link in the chat box. If you are using your laptop, it is advisable. You can always check out clicking on this link or maybe mobile also. I don't know how will it work, but I generally prefer to go with laptop or desktop. So here is the screen. I started exploring few things. So it's not related to maths. It's basic idea related to the computer science. So total, and you can see over here the curriculum. When I click on curriculum, so hands-on lessons with the instructional videos, 1 hour lesson, and then start coding with a single lesson. So say you're talking about characterization or interactive presentation, some dialogues, narrations, and so on. Then 1 hour for more coding, and then when I go on, so animate a name. So Scratch programming. How many of you have used Scratch? Anyone? Okay, anyone else? निकुंज और बाकी जो भी हैं, you can write in a chat box. Akashdeep, Daman, Kanika, Manika, Mishti, okay, सार्थक, तनिष्क और किसी ने यूज किया है स्क्रैच? स्क्रैच बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये इवन सिक्स क्लास स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस. I am not a computer science student, right? But I had a passion with computer. That's why I tried to check out few things on Scratch, and it was not much difficult. Even using the basic idea of a Scratch, because I have created, say, my CRPF examination website. So I used the Scratch, the basic idea, and created one app for the same, a mobile app. I have created that.
but I don't know anything about the coding or programming in journal. I studied that long back, maybe about 20 years back, but they were C programming, not even C++. I studied C, or there was a Fortran, and those languages which are not used now. They are the machine languages which I studied 20 years back. So anyway, so idea is when I say come to animate a name. So this is the lesson and this is for 1 hour. So whenever you have some leisure time and if you are really passionate or you are interested, just click on animate a name. This is just a sample. There are lot many of lessons provided. So you can see what all is over here. Animate a name. It contains 2 lessons, 1 hour to 2 hours, depending on your speed, how much you can grab. So lessons are there, examples are given, and then the materials are also provided. Okay, what all is required. So proper lesson plan, step by step guide is given to you how you can start with this. So let me go to say lesson, and then you can see few examples, and it's provided in 2 different languages. मुझे नहीं पता ये कौन सी second one कौन सी language है. जर्मन, फ्रेंच, पता नहीं, जो भी है फ्रेंच है ना. ओके या. सो मैं इंग्लिश में गया ऊपर. लेसन 45 मिनट से बता रहे हैं 90 मिनट्स लेसन. लेट मी स्टार्ट this lesson. So when you click on start, you will always get a welcome message and an introduction to this. So I don't know whether the audio will be clear or not. Was it audible? Okay, ठीक है. So means एक introductory 2.5 minute video will be there. Right. So अब इसके बाद they are showing, they are just to save the time. On the right hand side, you will see then the links starter project. You need to click on starter project. So it will open a new tab, and therein you can see the Scratch is open. On the left hand side top, you can see Scratch for CS first. So alphabet A is there. You can always change it, and then there are the instructional guide. Following that, you can understand what exactly is required. You just need to drag and drop, adjust them, and you will see certain changes they may take place over this. So these are the things, I mean, that you need to explore. Now can you see what change has happened when I use this, and then I can always change this, and then some different kind of a background is over there, and then you can always save this right as an image. So lot many options are there on the left hand side, even motions, looks, sound, events, some control. So go to Google and search for Scratch. So basic idea is clear, because I know few students, अपने स्कूल की ही बात कर रहा हूँ, even they are in 6th 7th class, they are using it a little bit. Scratch को वो बता रहे हैं, इस तरह से students are using it. So not difficult as such to understand about this. So this is, and then how you can change the color, grow and shrink, draw letter, spin कैसे करवाना है, bouncing कैसे करवाना है. So step by step everything is there. Okay, let me go back to again curriculum. So this is 1 hour. Duration, time, animate, and then adventure on high seas, something like this. Then even the multi-day units, maybe 8 to 12 hour project about say music and sound,
or intermediate level things. That was a basic, then intermediate level, and then followed by the advanced level. So advanced may, if you are interested with the game design or the sports, so you have the lessons for even say 8 to 12 hours. So there are total 8 lessons, so you can always click on it, view the lessons, what exactly is required, how to go about this. So अभी तो चलो आपके फाइनल टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, you must be busy preparing for your examination. बट यस, ये एक नॉलेज में होना चाहिए कि जब भी थोड़ा टाइम मिलता है, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस lessons and badges, can you see on the left hand side? Again, choose based on your interest, maybe say music and sound, and music and sound, all the lessons which are related to music and sound, they are available. Of course, you need to follow a systematic way. So start with lesson 1, and then videos, reflections, everything is mentioned over here. So that's a pre-survey about your understanding of certain tools. So they can, for each item, choose the answer that is true for you. I can create things with computer science. You can always say strongly disagree. Means I don't know the ABC of computer science or creating of the, or I disagree, no, I cannot do. I have just the basic idea, and so on. So according to your responses, you will be getting the options available, how you can go about further. So this is one option which I wanted to share with all of you. The link is in the chat box, so please explore whenever you have some time. Then of course you have the option to create your own projects. You can share your projects, or even if a teacher has created the account for the students, so all students work will be compiled together in the teacher's account, right? तो प्रैक्टिकली क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं आता है और टाइम परमिट नहीं करता है, इसीलिए इसको इतना डिटेल में नहीं स्टडी किया जाता है. और इवन ये भी बता दूं, जिन्होंने CS फर्स्ट को थोड़ा करिकुलम अच्छे से इसको कर लेते हैं, देयर आर लॉट मेनी national and international level competitions also, so students can even take part in that. And now we in our school have the ATL lab, adult tinkering lab. So when we'll be in a physical mode very soon, I'm hoping for the same. So वहां पे जब आप जाते हैं, आप कुछ और अलग चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं, so there will be a great deal of learning there as well. Anything strikes to your mind as of now? I'll take a pause for 1 minute. Yeah, Nikunj. Yeah, sometimes it happens that the information, that knowledge, the awareness is missing. So अब एक आइडिया मैंने आपको दिया है, मे बी अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देर आर 9 स्टूडेंट्स, 9 or 10 स्टूडेंट्स दोज हु हैव जॉइंड, उनमें से एक भी अगर आप में से इस चीज को समझता है, दो भी कर लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो आई थिंक माई टास्क इज डन. दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. ओके, नेक्स्ट चीज जो अब मैं बताना चाहता हूं, दैट इज अ वेरी कूल फीचर ऑफ गूगल डॉक्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड गूगल डॉक्स? एनीवन यूजिंग गूगल डॉक्स? पता है क्या होता है गूगल डॉक्स? Okay. Yes, sir. So it's like your Microsoft Word, right? The only difference in a way, it's totally free. Microsoft Word हम मान के चलते हैं कि वो फ्री है, बट अदरवाइज दैट इज अ पेड. अब हम क्रैक्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वो यूज कर लेते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, बट अदरवाइज दैट इज ऑलवेज पेड, right? Let's say if you have purchased a new laptop, then possibly Microsoft or your Windows 10, and along with that you will get the MS package, but otherwise MS package is not free. वो cracked वाला तो सबके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में मिल जाता है, but when I talk about Google Docs, so it's totally free and it's totally online. So all the documents are stored
and they are always available online. So as you can see, one of the doc over here which I have bookmarked because I'm taking care of examination as well. So there are certain guidelines related to examination. So I don't need to search my desktop or my laptop. I just have bookmarked this because this is related to the examination conditions, rules and all that. So it's already bookmarked. Now how I can go to the document. So just type docs.new. This is a shortcut, docs.new, and it has created one doc, and at the top this is the name of this document, and at the same time there is the option for share. Can you see all that? People at CRPF Public School with the link. When I click on the share icon, I need to name this. So 11th D demo, and let me save it. See the option share with the people and group. I can add the email IDs of all those with whom I want to share. And what is the benefit of sharing? One thing, they can always check out this document. The second one, they all can work together. We all can work together simultaneously on the same document. What does that mean? Look at the bottom. Get link, CRPF Public School. Anyone in this group with this link can view. On the right hand side, viewer. And there are the options of viewer, commenter and editor. Let me do one thing. Instead of CRPF, let me make it anyone with the link, because sometimes it happens you may not be having the account logged in. And then instead of a viewer, let me make this document as an editor. So let me copy this link and click on done. I am posting that link in the chat box. Those who are using the desktop or laptop, उनके लिए तो easily इसको access करने का होगा. Otherwise, you need to have, if you are using your mobile phone, you need to have the Google Docs app installed. So please click on this link, everyone. Let me see who all are joining and preferably using your school account. So you can see Tanishq Bist is here. Can you all see? Okay, Sarthak Yadav is here. Okay, good, Manika. So you can start typing. Good morning. Hello. How are you? Anything? So can you all see? Tanishq is right now. Sarthak, you can choose some different line because already one person is working. So we are talking in terms of working in a collaborative manner. So at the same time, 50 persons, this is a limitation, maximum 50 persons can see and they can edit the same document. So imagine a situation, you are working on a project and then a group of 8 students or 5 students, they all can work together. And that's not only in a document, even if I open a, जैसे MS Excel होता है ना, इसी तरह से Google Sheets होता है. जिस तरह से Microsoft में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, PPT, इसी तरह से गूगल में क्या होता है? एनीवन अवेयर ऑफ दैट नेम? पीपीटी की जगह यहां क्या होता है गूगल में? Yeah, that's Google Slides. So all three have the similar features as already mentioned, the share option. So you all can work together simultaneously in the same document. So now it's your thinking कि अब आप इसको किस तरह से और better way में explore कर सकते हैं. So अगर आप presentation बना रहे हैं, you are that Google Slides. So therein again you have the same option. You can work in a collaborative manner, and everything is stored on a cloud. So you will not to worry about this. और साथ में star की option दिख रही है. Important document जैसे कहेंगे, I can move this to my some specific folder. If I've created a folder, so these are my different folders in my drive.
right, related to ATL, CRPF, and then C examination related ही mainly होंगे यहाँ पर, right? So my presentation, my resume, and lot many other folders are here, right? So I can always move that file. Then I have the option to see the document status. And very interesting thing is when I click on this, last edit was seconds ago. When I click on it, check this out. Who all did what change? The current edition, look at this. So तनिष्क बिस्ट, कलर से आपको समझ आ रहा होगा किसने क्या लिखा है. So is there anyone who would like to add on? Please add on, write something, type something. थोड़ा एंटर मार के थोड़ा नीचे लिख लीजिए. चलो, सो दैट्स द बेसिक आइडिया. और इसमें फिर मैं जाके यहाँ देख सकता हूँ कि किस किसने क्या लिखा है. सो कलर से पता चल रहा है ना कि साथ तनिष्क बिस्ट जस्ट एडेड दैट हेलो. इवन इन अ गूगल शीट्स, जैसे मैंने बताया, सेम फीचर अवेलेबल हैं. किसने कब क्या लिखा है वो सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी. और लेट्स से समवन हैज डिलीटेड समवन एल्स वर्क, कहीं कोई गलती भी हो गई है, व्हेन आई से कम बैक टू दिस, and there is the option for restore this version. So I need not to worry about the loss of my information. I can always revert back to the previous document version. जो मैंने इससे 5 मिनट पहले के टाइम पे कुछ काम किया था, I can always revert back to the same. अभी मैंने आपको edit right दे रखे हैं. Quickly let me now click on share. और देखिए अब मैं आपको एकदम से viewer कर दिया. Done. So now, if you try to type, now you will not be able to do it. So it's just in a second, fraction of a second की बात है. So now you have the option to view it. So you might be trying to type, but you will not be able to do it now. Next thing, check this out. This is very important and very interesting as well. Everyone, check this out. Let me do one thing. Go to tools and there is the option for voice typing. Voice typing, by default it's in English, so click to speak. Good morning dear students, hope you all are doing well. My good wishes are with you for your class 11 final term examination. I am sure that you all will do very well. God bless you all. Keep learning, keep inspired, keep yourself motivated. Take care of your health. You all will do very well in your life. Thank you. Even you can see everything is there. Even I can always speak. You can see, you can say period and new line. Period कह दिया, full stop लग गया, new line कहा, वो next line में ले आएगा. That way you can always type it. Not only in English. When I click on it, there are more than 120 languages. Check this out. But I can understand, ये तो पता ही नहीं ये सब क्या. हाँ, मराठी नहीं, मुझे तो हिंदी आती है सिर्फ. ओके, फिर हिंदी and come back and then नमस्कार. आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है. मैं आशा करता हूं कि आपको ये फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे. अब वो प्रॉब्लम हो जाती है ना हमें कि ना प्रॉपर हिंदी आती है ना प्रॉपर इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के अंदर बोल दिया. चलो वो सारा टाइप होकर आ गया आपके सामने. तो चॉइस इज यूअर्स. मराठी, नेपाली और आपके सामने ही हैं. मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस जो मेन जो यूज हो रही हैं, they are mentioned here, that you can verify, that you can check. Next thing is, let me search for Taj Mahal or Taj Mahal, then I get some information related to Taj Mahal. Okay, let me just copy this.
and let me just paste it over here. Okay, so these things will create certain problems, the references which are given, but anyway, this is in English. Go to tools, go to translate document, and then choose a language. Again, check this out. In which language? Hindi, English, Gujarati, Italian, Japanese, which language I do want. To convert this, let me choose Hindi and click on translate. 5 तक count करिए and it is translated in Hindi. So even if it is a 10-page or 100-page document, depending on the number of pages, it might take say 10 seconds, 50 seconds, 1 minute, or even less than that. And it will convert your whole document in any of the language of your choice. So again, when I come back, now let's say I choose tool, translate document, and let me now choose the language, say Arabic. I don't know anything what exactly Arabic language, but when I click on this, and here is the translation of that document done in Arabic. So you must have be using some different tools, softwares are there available, Google Translate app is available, but this is inbuilt in your Google Docs directly. We have the options for getting the add-ons also. So अच्छा वो मेरे दूसरे अकाउंट में रहेगा. When I go to my another account and let me now open here some document and let me just copy this and paste this. पेस्ट क्यों नहीं कर रहा? Control C. अच्छा हो चुका है. Yes. Now check this out. Can you see the option of add-ons here? When I click on add-ons, so these are the add-ons which I generally am using. Now add-ons are small program, software programs which works with the Google Docs only. So they will be helpful and working for this document. So you see the option of Plagium. When I click on Plagium, select the document and see what is going to happen. Plagium and check selection. So it had started working. So now it will tell, it's checking the originality of the content. It's automatically let me know from where you have copied this content. So checking the plagiarism, that is being done here. 87% search is done and okay. So can you see over here, first one, 95.9% it's saying it is copied from this particular website, right? I don't remember from where I did copy this. I did from the Wikipedia, but the same is copied in this website also. Same is available in chess.com or Wikipedia and so on. So even website to websites, they copy the content from each other. So you all can see. So the matching content here, its matching is lesser, only 28%. So when you go for your even higher studies or go for your research work, the companies and the institutes they always check your work. So you maybe say you plan to go for your engineering or maybe say you are planning to go for MBA. वहाँ जो अब आप या अगर आप PhD करते हैं या रिसर्च फील्ड में आते हैं
यू आर सबमिटिंग योर वर्क। सो वो वर्क आपसे हमेशा वर्ड डॉक्यूमेंट या गूगल डॉक्स की फॉर्म में मंगवाया जाता है, इवन पीडीएफ्स में भी ये वर्क कर जाएगा, राइट? सो द आइडिया इज के दे ऑलवेज चेक योर वर्क लाइक दिस। आई एम यूजिंग अ फ्री प्रोग्राम, this is a free add-on. There are the sophisticated, the paid one, जो इससे भी इंटेंस डिटेल निकाल कर बता देते हैं कि कहाँ से कितने बजे क्या चीज कॉपी किया गया है। सो इसीलिए ये इमेजिन करना कि किसी में ऐसी मैंने XYZ वेबसाइट से ढूंढ लिया कोई कंटेंट, कॉपी पेस्ट कर दिया है, नो वन विल गेट टू नो, ऐसा नहीं है। So इसीलिए please remember we need to understand this is one of the digital skill you need to understand as a student. You all are in a 21st century. तो यहाँ पर डिजिटल स्किल्स की हम बात करते हैं। तो वन ऑफ द डिजिटल स्किल इज रिस्पेक्ट द कॉपीराइटेड वर्क डन बाय अदर्स। डू नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट देयर वर्क एंड क्लेम कि ये आपने अपना असाइनमेंट करा है। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट दिया, कोई काम हुआ, एक ने करा, दूसरे ने उसको कॉपी मारा और दे दिया। इट्स वेरी कॉमन, इट्स हैपनिंग, हमारे टाइम से हो रहा है, मुझसे पहले से भी हो रहा है। बट अब जो मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, देयर इज द अवेयरनेस, there is a respect and privacies for the others. Everyone is advocating that throughout the globe. इसीलिए इन चीजों को समझना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है, योर वर्क शुड बी ओरिजिनल। और कुछ रेफरेंस लिया, जैसे नीचे वालों ने लिया हुआ है, ये कैन यू सी, इसने 12.6% लिया है, इतने में मान लेते हैं दैट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। 17% तक ओके है। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, 20% मैक्सिमम लिमिट दी जाती है कि अगर मान लो आपने 100 पेज का प्रोजेक्ट दिया है, तो 20 पेजेस उसमें ओवरऑल में इधर उधर से अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज मैच भी कर जाती है, दैट इज ओके। उससे ज्यादा होते ही एवरी वर्क इज रिजेक्टेड। तो मान लो मैंने इस लिंक पे क्लिक करा, ये है ना knowledgeyug.in। अब देखो ये यहाँ पे बता देगा कि कहाँ से, देखो कितना कितना किस तरह से दिखा रहा है ना कि कॉपी करा हुआ है। आई कैन ऑलवेज गो टू दिस वेबसाइट ऑल्सो एंड देन इट विल शो मी दी एग्जैक्ट कंटेंट। तो अब मैं नहीं कह रहा कि ये इन्होंने अपना खुद का लिखा हुआ है, अब वो विकीपीडिया के ऊपर है एंड विकीपीडिया इज ओपन सोर्स, एनी वन कैन एडिट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। जो भी चीज आपको विकीपीडिया पे मिलती है, आप इसको जाके मैं इसको एडिट कर सकता हूं, आई कैन ऑलवेज एडिट दैट। सो इसीलिए 100% ये रिलायबल इंफॉर्मेशन है, वी कैन नॉट बी एवर श्योर अबाउट दिस। देयर आर द मेथड्स, यू कैन ऑलवेज edit this. So you see the option of edit links. I just need to log in using my this email ID. तो उससे तरह से करके मैं इनको एडिट कर सकता हूँ। आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, आई कैन ऑलवेज एडिट ऑल दीज लिंक्स। तो विकीपीडिया पे आप ये कहें कि 100% आपको प्रॉपर मिल गई हैं चीजें, ऐसा नहीं है। और आप चेक करिए, जैसे मैंने एडिट करने का सोचा, ऊपर क्या आ गया, वार्निंग, you are not logged in, your IP address will be publicly visible if you make an edit, and of course if I do something wrong over here, कहीं भी कुछ होता है तो वो एकदम से कॉपीराइट इन्फ्लिजेंट के आ जाती हैं चीजें। एंड ऑफ कोर्स देयर आर द रूल्स कि अगर आपने गलत कोई इंफॉर्मेशन यहाँ करा है IP एड्रेस से, दे विल फेच मी, दे विल फाइंड द पर्सन हु हैज डन द एडिट्स, अगर कुछ भी गलत ऐसे रखा गया है। सो इसीलिए इन सब चीजों को, और देयर इज द ऑप्शन फॉर लॉग इन। विकीपीडिया में अगर आप लॉग्ड इन करना चाहते हैं तो लॉग अपना यूजर नेम पासवर्ड वो करके देन यू कैन ऑलवेज एडिट इट। एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू शेयर, द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। एनीथिंग स्ट्राइक्स टू योर माइंड, और कोई चीज आप शेयर करना चाहें, कोई इंटरेस्टिंग आपने देखा हो, आपको पता हो?
आप में से कितने हैं जो वो आज का जो मैंने कहा था मैथ्स क्रिएटिविटी टेस्ट वाले? मृगाशी मुझे याद आ रहा है, और कोई है मिष्टी या नहीं? मुझे याद नहीं, पता नहीं कहा था नहीं कहा था। एनीवन एल्स इज इंटरेस्टेड? ओके तनिष्क, ठीक है। सो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप। वही है कि मीट लिंक है, बस उससे आपको ज्वाइन करना है। 135 पे कर लेना ज्वाइन, जस्ट आफ्टर योर लास्ट क्लास। और उसके चैट बॉक्स में बस मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा टेस्ट का। एंड दैट इज नॉट अ टेस्ट जहाँ पे आपका नाम सामने पहली बात आ रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिसर्च वर्क जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CIC डिपार्टमेंट वो कर रहा है अबाउट चेकिंग आउट द रैंडम क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। और अब उसमें 7th क्लास का होगा, 9th का होगा एंड 11th का, तीनों के लिए पेपर सेम है। तो अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन, कि अब मैं कह रहा हूं आप 11th में हैं और 7th क्लास के स्टूडेंट को भी सेम पेपर मिलने वाला है। तो इट इज नॉट अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आपसे कोई इंटीग्रेशन या अलग से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व का नहीं है। इट इज अबाउट कि आपने कोई एक इमेज को देखा, राइट? आपने मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ऑरेंज रख दिया, अब उसके अंदर मैथ्स कहाँ है, उसको आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, समथिंग लाइक दिस। तो वहां पे थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा टाइपिंग करना होगा इमेज को देखकर, और सेकंड ऐसे पार्ट मिलेगा जिसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में पूछा गया है। सो आपको कुछ चीजें स्कैन करके, भाई पेपर पे बनाया आपने उसी समय, तो बी रेडी विथ पेन पेपर, भाई वहां कुछ बनाया, उस इमेज को क्लिक कर दिया उस गूगल फॉर्म में। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, एनीवन एल्स इज इंटरेस्टेड, सो डू लेट मी नो। आपका भी नाम ऐड कर दूंगा एंड यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दैट। 1.5 आवर कह रहे हैं, बट आप उसको 30 मिनट्स 40 मिनट्स में भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, योर क्रिएटिविटी। चलो अब नेक्स्ट क्लास हमारी रेगुलर मैथ्स की है, तो आई विल ज्वाइन इन 2 minutes, बट यू ऑल स्टे इन द क्लास, सेम लिंक इज वर्किंग, राइट? आई विल ज्वाइन इन 2 minutes.